बस वाइब ही वाइब है, हर पासे हाइप ही हाइप है। Man don't wait for none, फर्क नहीं पड़ता तू आए या आए नहीं। दिल मेरा cold as ice है, put it in my cup, नशा या ख्वाहिशें, loyalty and blood मिलते नहीं जायचे। मुझसे ना पूछा कर हम कहाँ गए थे, इतना समझ के हम जहाँ रहे थे। सहरा में उतरे दरिया से बहे थे, जख्म लगे थे दर्द भी सहे थे। दुनिया की हड्डी खुदा के चाहिए नहीं थे, नहीं थे तुम में हमारे वाले गुण ही नहीं थे। वहीं देख पतली गली पकड़ हाथ छोटे, वहीं देख कभी तुम कभी मैं, कभी मैं कभी तुम रहे गुम अपनी दुनिया में। जिंदगी खेल लोग पहचान दे कौन सांप कौन सीढ़ियां हैं। ड्रॉप इन नॉलेज जब के गया नहीं मैं कॉलेज, मेरे आगे लौटे चुपे ये जबान का नहीं फालिश करूं खारिज। जिनको होती जिनको खारिश में के ट्रेन गोला बारी, ये कराची वाली वाइब तो मैं आ रही। मोस्ट स्ट्रीम नोज क्लीन फटी जीन्स, बेबी देती लाइन मैंने माइंड ही नहीं की। बेबी देती लाइन मैंने लाइन भी नहीं की। मेरा अक्स मेरा सगा फिर वो आए ना ही सही। माइंड ओवर मैटर सोते में ठोक देंगे माइंड ओवर मैट्रेस। रियल टॉक छोटे स्कार्स ओवर टैटूज, रियल टॉक कभी बहुत पीछे है तू सोच तेरी महदूद। She knows के मैं होश में नहीं, She knows मिलना रोज तो नहीं, She knows वो मेरी दोस्त भी नहीं। हम जितने क्लोज हैं उतने क्लोज भी नहीं। पर 12 बजे बदले इरादे हमारे, 12 बजे तूने खुद को दिया था मुझे, वो मुझे लगे लाइक अ मॉडल, उसके लिए लाया पूरी बॉटल। आज के बाद जो मिल ना सके तो भूल जा जो हुआ 12 बजे। 12 बजे बदले इरादे हमारे, 12 बजे तूने खुद को दिया था मुझे, वो मुझे लगे लाइक अ मॉडल, उसके लिए लाया पूरी बॉटल। आज के बाद जो मिल ना सके तो भूल जा जो हुआ 12 बजे। Bitch, you wanna vibe in a high zone, yeah. Bitch, you want a piece of the pie. Shitty bitch, मुझे करे excite. I'm too drunk and high for this shit, baby. I'm young and wild, हमारे drip heavy. हम circle में सच करें lit, baby. वो पूछे बैठे बैठे ऐसे कैसे hit दे दिया। यल्ला हबीबी, I'm back in the city. मैं blue area वाली सड़क पे धती। हल्लक की हड्डी सी बन के तू अटकी है, हट रही है, हट जा तू अभी मैं मस्ती में चल। You know the drill. मैं था जब यहाँ पे तू कहाँ थी, तू जहाँ थी अब देखे मुझे वहाँ से ही, अब तू वहाँ से ही और मैं वो नहीं। अब लोकी मैं रखता नहीं खुले में फाड़ू, मैं वो नहीं जो दर्द दिल स्टोरी पे चाड़ू। पानी में मौली विद बैडीज थिक बॉडीज और नशे में वो तेरे नाम की दारू। लांती वाली वो यादों में डूब के लफ्जों की नजर हम करते खूब थे। बचपना समझे वो अपने थे फलसफे, फलसफों में चुते आपे महबूब के। महफूज है वो सब सफा सफा करके, दिल सफा तभी सब रफा दफा करते। पन्ने पन्ने पे है लखते जिगर, राबीती की किताब अब खुद नहीं पढ़ते। सड़कों पे स्कर स्कर करती है वेब, can't sit with us, ये तेरी अर्जी है bitch, तेरी मर्जी है bitch, shit, this is how I live। 12 बजे I'm rolling a J, 12 के बजते ही bottoms up, 12 से लेके हम 12 तक, 12 में hot as fuck। तू ले आ तेरी girlfriends and meet me at the hotel room, hey, तू बोतल खोल मैं बहुत चिल हूँ। She knows के मैं होश में नहीं, She knows मिलना रोज तो नहीं, She knows वो मेरी दोस्त भी नहीं। हम जितने क्लोज हैं उतने क्लोज भी नहीं। पर 12 बजे ओनली बुलडॉग। आ जाओ ये आ जाओ। ये आ जा।
पड़ी बेंच चोद किधर था ये रेना पड़ी कोसली वाले भाई ये क्या खेल रहे हैं यार बढ़िया। अबे मैं ट्रायड नहीं कर रहा हूँ इसलिए इनको ट्रायड करने दे ट्रायड तो मैं भी नहीं कर रहा ब्रो। आज हम क्या करने में ट्राई हार्ड मेरे को नहीं करना तू कर लोड ही नहीं है। सेज दूसरा साइड दूसरे जन को घुस देने भाई तेरे का हील चाहिए भाई। हेलो हाँ भाई तो अकेले मत जा उधर लवड़ा लेगा बैक स्टेप तो देखना ही नहीं है चैम्बर क्या कर रहा है तू भाई जेट से खेल रही है भाई क्यों खेल रही है ऐसा। It seems these strangers want me dead. Yeah. Joke's over! You're dead! भाई इसका अल्ट तो ओपी है यार फक। Last player standing. Spike down B. ले इसको हेड नहीं लगा ये क्या चूतिया गेम है हेड एम कर रखा हूँ अबे एम हेड किया था क्या माचू नौ पिंग पे भी खेल रहा ना वो भी तो फर्क पड़ता है ना बेंच उसके 3 बॉडी 2 लेग शॉट ठीक है भाई अब चुके मैं मिड खेलेगा Enemy spotted B. I have dropped the spike. Reloading. किधर रहा है मुझे। Player standing. तुम सभी ओपी खेल रहे हो। ये देख ओह भाई फिनिक्स लमाओ फिनिक्स का गलत सीन हो गया भाई अरे आप थोड़ा सही खेलना पड़ेगा ना प्रो तो दिखाना पड़ेगा बहुत उछल रहे बात तो हो गया इनका चलो भाई चलो मैं सेव कर रहा हूँ फिर बताता हूँ इनको कैसे मतलब कैसे बचते हैं ये लोग
बहुत से गिव यू For you. Deploying drone. Enemy marked. कल बे लवड़ी Scanning ahead. Reloading. उठा दे उसको वॉल बैंग लगा है हेड One enemy remaining. Right here. Planted. ये चेंबर बढ़िया प्लेयर है यार Here. Here. फिनिक्स को बस 2 गोले मारे हैं, रेना को एक हेड दिया था, फिनिक्स को एक हेड एक बॉडी, खत्म बे हमारे भाई का एम शरीफ ओनली, नॉट सो शरीफ बट ओनली शरीफ, ओनली फन, ओनली फैन, नॉट फन। चलो बेंच करता हूँ। Scanning ahead. Enemy tagged. मैं बहुत सड़ू चैम्बर यार, तू पीक ले ले या मेरे को लेने दे। Cage triggered. Fire in the hole. Revealing area. और ये शॉट रे Found them. Player standing. Spike down B. Thirty seconds left. रेड लाइट करना, रेड लाइट 10 seconds left. One enemy remaining. ले ले, रिवर ऑफ है लेफ्ट। What do you say? इसका ऑफ सही है रे, Ready to stretch your wings? Need a drop. कुछ नहीं दे रहा वक्त बेंच। ठंड लग रही है भाई, हाथ चल नहीं रहा है यहाँ पे और ट्राई आउट करने की बातें चल रही है। भाई मेरे को तो ये गेम को अपडेट करने में ही इतना टाइम लगा, अभी पैकेट लॉस भी आ रहा है। Scanning ahead. You will not forget my allies. Get out of my way. भाई मुझे खेलने को नहीं मिल रहा है यार, उठा दे भाई। Satisfied. यहाँ से उठा दे, नीचे गिरा मैं तेरे। हाँ
भाई ये तो हेड था ब्रो। मैं कूदा ना, मेरा एम नहीं था। क्या बात कर रहे थे? मेरे को नहीं खेलना है ये वैलोरेंट अनरेटेड, इसीलिए खेल रहा हूँ मैं। मुझे खुद नहीं खेलना, फर्क ही नहीं पड़ता। हिटर ट्राइड करके ये दोनों कहाँ जाएंगे? बिंचो 30 seconds left. भाई ये कौन सी ऑप है जो इसके हाथ में है? Last player standing. bunch Spike down B. outline on. Caught one. 10 seconds left. They demand a fight. Who are we to disobey? स्ट्रीम पे लोग नहीं आ रहे अब, क्यों पता नहीं। कहाँ पे नहीं आ रहे लोग? ओके Oops. Joke's over! You're dead! Spike down B. Hey. They are so dead. There they are. इसको क्या जगह पता लगी क्या क्या है? एबिलिटीज नहीं पता लग रही मुझे। Last round before the switch. Need a drop. We lose everything after this. Spend it. Can someone get this? Fight! Can someone get this? Take flight. Your duty is not अरे done. मारने के लिए मारेगा। पिक ले फट से लेना जल्दी। Last player standing. नहीं हो रहा है, ठंड में मेरे से क्लिक ही नहीं हो रही है भाई। मेरे से कुछ नहीं हो रहा भाई, हाथ ठंडे पड़े हैं। Switching sides.
हीटर लगाना अरे यार पड़ेगा। पुश करें मरे हम्म तो जाना भी है। हीटर लगाना पड़ेगा। इम्प्रूव क्वालिटी मेरी गांड मरा रही है। ये You fought well. Return to dust. Spike planted. भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम दोनों, भाई क्या कर रहे हो? Revealing area. चूती है दोनों। One enemy remaining. नाइस वन। ये देख Out of charge. Reloading. Let them try to get through. Tighten our defenses. Barrier created. Here. Spike planted. Healing. One enemy remaining. Last player standing. किस्मत Time to stop. रुकना, सरेंडर क्यों करना है? हारेंगे। अबे जाना है मुझको ब्रो। इधर नहीं जाना है, उस चूतिए को तो मार के दिखाऊंगा मैं। बहुत ही चल रहा था ना लंच। 15-11-5 है ना, उसको दिखाता हूँ। उसको तो मार ही रहा हूँ मैं, हार रहा हूँ उसकी भी। उस चैम्बर को देख, जैसे हाथ आगे करके जा रहा है कहीं से। क्रॉस कर पीछे से, तू पीछे जा, तू पीछे जा। जेट आया ऊपर, मार ऊपर। 52 ऊपर। Last player standing. क्या हाल है आयुष भाई के, कैसा है भाई? चलो चैट नहीं पढ़ रहा हूँ क्यों मैं? कब आया चैट? You know, from the front. टॉगल टाइम लैप्स 26 को ना, अब भी आया ना भाई।
चैट इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऊपर है फोन, इसको मैं नीचे लाऊं कैसे? यहाँ पे चलेगा ना? चलेगा ना भाई, दौड़ेगा। Revealing area. पीछे हो जा। ये फंस गया सीएम। वहीं पे वो मैंने देखा वो चैम्बर आगे ये है फैंटम है मेरी। जितने फैंटम देख के नहीं रहा है भाई, ये टायर्ड क्यों ये देख के भी कैंप कर रहा है भाई, जाके मारो यार। वेट कर लेता ना, मेरे पास थी प्लांट नहीं हुआ है, वेट कर ले। मेरी गन थी ना ऊपर, वो लेके जाता। Spike planted. Last player standing. इनको भरोसा नहीं होगा अब। ये देखिए एक चूतिया नहीं गया। लैंड फिनिक्स। Match point. They will scurry, and then they will die. Scanning ahead. Spike down A. One enemy remaining. No one left to send a message. Oh well. ले Weapon here. Come into the unknown. एक मिनट बिना एक मैसेज पढ़ रहा हूँ, एक मिनट दे मेरे को। और क्या लॉन्ग टाइम नो सी भाई, तुम लोग आते नहीं हो भाई, मैं तो हो जाता हूँ। बढ़िया बता। शॉट Revealing area. आईडी बता, नया वाला ऐड करता हूँ। यही है मेन वाला, पुराना वाला डार्को स्ट्रिक टॉक्सिक, एकदम मेन वाला। They didn't actually think that would work. If they try something, I'll see.
बी चलो बी आएंगे ભાઈ માં તો એડ પણ આવે લાગીને હા મારામાં તો આવે જ છે એડ As one. Get out of my way. Spike down mid. नहीं है ब्रो वेट कर ले Here. One enemy remaining. चालीस थे दो शॉट Even with numbers, anything can still happen. Remember that. They are so dead. गाइस जो भी देख रहे हो लाइक करो यार लाइक नहीं हो रही क्या कुछ नया आ रहा है कुछ नया बहुत ही जल्द आ रहा है चैनल पे कल परसों तक आ जाएगा ये Scanning ahead. स्पॉन खेल ले क्या वो लोग ये पे आ गए ये पे आ गए You're dead. Enemy tagged. Spike planted. Opponent killed. Last player standing. Attackers win. जॉर्ड ना भाई मैं जॉर्ड हूँ मैसेज अरे बहन जो एक की वॉचिंग क्यों दिखा रही है जबकि ज़्यादा होगी वॉचिंग एक डेढ़ दो थी हो दो तो होगी ना भाई ये क्या है ये 22 किल कब कर गया भाई चैम्बर 14 किल लवड़ू ने सिर्फ 3 किल लिए पूरे हाफ में उछल रहा था बेंच पे Match Oi. found. स्पाइक रेस्क्यू लगा भाई क्या खपे Let's go. भाई बीबी के वाइन्स का वीडियो देखा क्या नया वाला शायद लास्ट एपिसोड था शायद लास्ट एपिसोड था ये सीजन 1 का लास्ट एपिसोड हो सकता है वो मेरे को लगा ऐसा फिर पता नहीं
Grounded. My ult's ready. Guys. There they are. So good. Enemy remaining. 30 seconds left. Flash देना flash. Nice. I'd stop that. Keep it up. Screw up and dead or not. Here. Here. On my way. On my way. On my way. On my way. On my mark. Here. Grounded. Ready. Someone's B. One enemy remaining. Reloading. How did they sense? Last round in the half. Oh lol, Odin. Damn. Let's go. I had things to do. Here. You want to play? Let's play. Enemy killed. Rift Walker's out. Fire in the hole. Lol. Shot done. I like you better. Hello Enemy guys. remaining. Today we're Last talking player standing. mouse sensitivity, DPI, and mouse settings. Now, if you're like me from a couple of years ago, you would just convert your sensitivity between games by measuring the same 360 distance with your mouse, and that'll be the same sensitivity in the next game, right? Wrong. Well, not always, but depending on how the FOV... जो जिगल पिगल बहुत करते हैं बस्ती वाले Silence. Reloading. Spike planted. Is set up in each game that you play, I will explain everything from picking a mouse sensitivity, converting mouse sense between why you should use a sensitivity calculator, and all the topics. I recommend skipping to the O. Be sure to subscribe as I have it. Now, before we do anything, we need to turn off Windows mouse acceleration. So you go to your Windows search bar, type in mouse, go to mouse settings, select additional mouse options, open the pointer options tab, and then turn off this enhanced mouse precision setting. Most of you already did this, but for anyone else that didn't or you forgot, you just fix some mouse acceleration. Don't worry. There are other ways to be useful.
आज मूड नहीं है बे. क्या opportunity? Mother shows. भोसड़ी की. Get out of my way. Spike planted. कितने बजे पे? 11:15. And that might have been ruining your aim. Up next, make sure your mouse is set to a DPI between 400 and 800. You can always change this later, and later I'll explain why you might want to set it to Last player 1600, standing. but that's after we use the sensitivity calculator. 400 or 800 will allow us to change sensitivity in smaller increments. If your mouse lets you change polling rate, use the highest available, but 1000. One enemy remaining. Hertz is Match point. રોકર સોરી ગાઈસ मैं ચેટ नहीं पढ़ रहा. કેટલી નાઇફ લઈશ લાલન આખું બંડલ લીધું બ્રો. अनदर अकाउंट और व्हाट नहीं रे मेन वाला. सॉरी गाइस हाँ थोड़ा चैट पढ़ने में लेट हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चूतिया एक ही व्यू दिखा रहा है मेरे को मोबाइल में रहा. यूट्यूब सक्स और व्हाट. एनिमी ए बोल दिया उसने. ए No, you don't. My ultimate's ready. भाई देख रेस को नहीं मारा. You want to play? Let's play. न्यू स्पॉन्सर नो. જેટલા તે વેલોમાં નાખ્યા એટલા મેં જીપીયુ Last player standing. ના ભાઈ ના 60,000 નું 30,000 નું જીપીયુ કોણ આપવાનું તને. Enemy remaining. Spike planted. Attackers win. और गेम एक्सेसरीज 30 માં 6 લઈશ તો એક ઓગો સારો લઈશ. હવે કઈ એમાં ભાઈ ડબલ રૂપિયા નહીં નાખવાના. હવે આમાં કઈ લેવું બી નથી મારે. હવે મારા ફ્યુચર ગોલ અલગ છે. ફ્યુચર પ્લાન ઇઝ ઓન માય ડેક. ये क्या है? डट तेरे लिए मस्त वाला अकाउंट देखा है 2500 के अंदर अंदर. इसको यहाँ पे डालेंगे. इसको यहाँ पे डालेंगे. इसको यो बॉनी. अभी अपन गाड़ी के लिए मतलब पैसा सेव करेंगे. I have to get some money for my car. सीधा थार लेंगे भाई. महिंद्रा का थार. रुक रुक रुक. मुमुई +4 और what? डर्ट खेलने नहीं आएगा क्या? Usually the most compatible. I've probably changed my sensitivity. Years ago, I was a high sense player, and here's my sensitivity at, and that's where we have a
average player sensitivities across a variety of games, it seems, which is conveniently the exact length of an A4 piece of paper. If your mouse space is smaller than that, then good luck. So first, open up your favorite FPS game. I chose Apex Legends V as this is FOV, but if you want a more in-depth guide about FOV, 110 FOV as this is important. I would personally set this around 100 to 110 horizontal FOV, but if you want a more in-depth guide about FOV settings, I have a full video on it, linked above and below. Then we're going to find a flat area of the map and an easy to remember point to look at. We're then going to line up the point with our crosshair and drag the mouse horizontally along the paper until we hit 30 centimeters. Keep doing this until you reach the point and the end of the paper roughly at the same time. It doesn't need to be exact. Now, from here, roughly at the centimeters. Keep doing, drag the mouse remember point to look at. We're then going to line up the point with our crosshair and drag the mouse horizontally along the paper until we hit 30 centimeters. Keep doing this until you reach the point and the end of the paper roughly at the same time. It doesn't need to be exact. Now, from here, either play offline in a target range, use an aim trainer, or play some multiplayer matches to see how it feels. We're just focusing on hip-fire aim, not aim down sight sense. If you feel like you can't be accurate because the crosshair moves too fast, then lower the sensitivity. However, if you feel like you're constantly lifting your mouse back to the center or running out of space, game that we play. As I showed in the intro, you could just measure the distance again with a ruler or measuring tape. करना पड़ेगा ये तो भाई, गाइस जो भी देख रहे हो मस्त चीज मिला। तुम्हारा परफेक्ट एम कैसे आएगा पता चल गया मेरे को। अभी 30 सेंटीमीटर स्केल किधर, किधर है? मिल गया, ठीक है। अभी हमें करना ये है, जाना है शूटिंग रेंज में, उसके बाद स्केल रखेंगे इधर, किधर इधर। थोड़ी सी कम है मेरी। भोसड़ी इधर रहना। थोड़ा और
0.5 यहाँ से घुमा के और थोड़ा Hmm. 0.6 है. But that's not the best way to do it. You should be using a sensitivity converter and monitor distance as your method. And that's because FOV plays a bigger part in aiming than you would expect. For example, here I am playing Modern Warfare at 120 FOV with a 45cm 360. I'm aiming at a target only a short distance on my screen. This is extreme, but then I change my FOV to 60 and aim at the same target. My 360 distance is still the same, but look how much further I'm aiming at my target from the center to the edge of my screen. Monitor distance basically adjusts your sensitivity so the same movement on your mouse is the same distance on your monitor. This is what creates consistency. पे रखते हैं 15 से ये आ रहा यहाँ तक 4. When moving games, Apex's 90 FOV value is Apex my 360. Well, that would be fine if 90 FOV in Apex was actually 90 FOV. Apex's 90 FOV value is actually .4 0.4 DPI 800. Native 27-inch. actually 105 FOV. Apex, if 90 FOV in Apex was actually 90 FOV. Apex's 90 FOV value is actually 105 horizontal FOV. But it doesn't tell you that, I only know because the sensitivity calculator told me. So this is why you would want to use a sensitivity calculator instead of just hoping that the values are correct. This is actually an issue with Battlefield games also. Did you know that if you play max FOV, which is 52, there are a few games and you having to calculate you to the monitor distance method. This basically makes it so whatever monitor size, FOV settings or DPI you use, everything should feel the same in your mouse movement distance. You simply search for the game that you're comfortable with,
For most people, this will currently be Warzone, Apex, or Battlefield, and then you enter your current settings from that game into each box. And then you find the game that you want to convert it to. Now, different games can have multiple variables that can affect your sensitivity, such as uniform soldier aiming in Battlefield or ADS FOV options like Warzone. Usually there'll be notes for this underneath the calculations. Once you've filled out the forms as best you can pick whether you want to use in-game settings or config file settings. Scroll down and you can see what values you will need to put into the settings to get the right sensitivity compared to the original game. But what if your aim down sight sensitivity is different to your hipfire sensitivity? Well, you can change the aim drop-down menu in the first and second game. ठीक है भाई, मेरे पास मेरी जो सेंस है सही है भाग. आया तो एक प्रैक्टिस करके ही जाते हैं ना ब्रो. ये भाई 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 ये क्या देख लिया मैंने।
ऑक्सी किधर गया? अबे नॉक्सी किधर गया? हाँ हाँ तू टी शर्ट એટલે હુકાટી કરી દીધા. रुक नौ से आ रहा है. आ तो गया नहीं है. ये क्या सीन है भाई, स्ट्रीम भी नहीं चल रही आजकल, पता नहीं भाई लोग नहीं आ रहे. कैसा है भाई? माइक किधर डाल के आया? लो ये जा बैकग्राउंड वॉइस मेरा 70 पिंग क्यों आ रहा है? XRP 73 रुपीज, व्हाट द फक. कैसे दिखा रहा है 70 हो जाएगा ठीक. और फ्लाइट मोड पे छोड़ना, हो जाएगा. Match found. हेलो, मैं पार्टी में हूँ रहा अभी तक. Match found. गली में मारी बैठी पास आने को मेरे, प्लीज. ये कौन है? नो साला डर्ट आया लेकिन खेलने नहीं आया. अरे वो मॉनिटर खराब है ना. गरीब दान दे के आ गया. गरीब है फिर भी दान देना है उसको, समझ रहे हो? समझ रहे हो? साड़ा नूबड़ा. ओए टेलेग ट्रेडिंग व्यू
मेरे पास लाइनअप से Everyone good if my pets run around out here? I don't do leashes. Should be yo great. be chance. Sorry about that. Yes. Shot. Nope. Thank you. लूफरिंग बोलते लूफरिंग. Radio. वेट कर भैया के लगने वाला है. Enemy squad time to hunt. Enemy A. One door, one back. Reloading. Toxin screen down. I need help. ओए क्या कर रहे हो? थोड़ा सामने. Toxin screen down. Last player standing. One enemy remaining. 48 पे. छी. बी पे यहाँ पे प्लांट करना. No charges left. Toxins going up. Here. Reloading. Person. Toxin screen down. Enemy spotted B. बाईस. Last player standing. 170. टीपी सेट करके जा. Enemy Nice. remaining. गन लेने के लिए देख तो क्या कर रहा है. गन 30 seconds left. अरे बेटे शॉट पे एल्बो. Did everyone see that? आजकल के बच्चे Now just dig in and climb आ up. जाते हैं मुंह खाए नॉक्सी जैसे. क्या वे नॉक्सी स्ट्रीम पे भी नहीं आता आजकल. Good on मॉड ya. नूब मॉड Impressive. चलता ही नहीं है. तू मॉड में नहीं चलेगा. Reloading. Toxins going up. यहाँ वाला प्लान देना. There. लेफ्ट में बॉक्स के पीछे यहाँ पे वो. क्लोज 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 क्लोज. Toxin screen down. तू भी मर गया. अरे मैं बोला तो तुझे मत देख ले एक बार. Toxins going up. We can rotate it. Toxin screen down. कब से वहीं पे था वो मिड से पूरा है. और जेट पे बैठा ला. Spike down A. I got the spike. Toxins going up.
Here. Here. Toxin screen down. यहाँ पे कर, यहाँ पे कर। 30 seconds left. Upto. Last player standing. तेरे को तक मैं Remaining. जोड़। You only thought that was close. सोल के लिए तो कुछ भी। Bye. ओ कुछ था, अरे यार वो वाला स्प्रे। हाँ हाँ ड्रॉप देना मुझे। She's nice. मुझे तो चंबर से ले लो। Need a drop. Nope. Thanks. Go. यहाँ पे ये वाला प्लांट करना। हाँ Toxins going up. Still inside. मिड। See ya. अभी चल। I need help. Here. Spike down A. 30 seconds तेरे left. सामने ही है ना मुझे। Last player standing. हमसे हेलो। नो ब्लॉक से। noob Noxy. Look your enemy in the eye. It helps with a cure. There. Attackers win. एक डीएफ लगा दे। डीएम लगाना है, डीएम लगाना है। बेटा आ गया आपका, बेटे को बुलाया जाए। स्टार्ट में आया। Match found. एक सेकंड रुक नहीं सकता क्या? एक वो ब्लैक नाइट भी आया हुआ था। हाँ उसको बुला ले डेथ मैच। अब क्या बुला ले लबड़े? डेथ मैच, डेथ मैच लगाया क्या? डेथ मैच। Fucking bullshit guy. You always do vivu vivu. Death match. Warm up. तो कल क्या कॉइन बोला था तू? CHR क्या? CHR या CHP कुछ है। रुक तुझे बताता हूँ ना अभी कौन सा ले। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम पूरा नाम CHR लिखना आएगा कॉइन DCX में। क्या नो प्रो में कि वो नॉर्मल में? नो अबे एप्लीकेशन में। वही तो प्रो, दो एप्लीकेशन है ना, प्रो भी है और नॉर्मल भी है। आईफोन में कौन सा आता है वो पता है? दोनों आता है। स्लाइड वाला है मेरा तो। पता ही था इतना नो हंकू। मेरा गो होगा, प्रो नहीं है, गो है। यस गो है, गो आगो।
यस पीछे से आके पीछे क्या तेरे को 2 शॉट पहले दिखाने के लिए मारा मैं। हाँ मम्मी હું કરું આ તો બધું થઈ ગયું ઓકે જોવાઈ ગયું કામ નથી હા દેહું નીચે ઓકે તો લખેલું છે એ લખી દે ઓકે કલ કરશું ओके कल करती है ये कौन था बॉन्ग हंटर हट ओ भाई आरएनजी चल रही है फुल टू आरएनजी शक चिकफिक बेटे क्रिंज है मोपी बोलते बैंग बैंग बुरा कैंप कर रहा है बेटे लोग हमें बोल रहे नाइस उनको कहाँ पता वो हमारे बेटे ए बेटे बेटे नहीं 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 सेम सेम वेट टेम्पलिस आजा कितना लगा था तेरे को मैं तो 30 एचपी हो गया सीधा मेरा ग्लो छीन लिया अभी कौन छीना सबकी बजाता हूँ
भाई 11 एचपी वाले बंदे को नहीं मार पाए वो, मतलब नूब चुके। ठीक ठीक। साढ़े आज तेरी घर मरना, आज तेरी सामट आई है बेटे। कहाँ गए बे? किधर है किधर है किधर है? तू किधर है? मैं बात कुछ भी। अब किधर है? ओ अब मत क्या, अभी अभी ए शॉट। ये शॉट है, टीवी मार। आता हूँ रे, ये टीपी मार दिया रे। कहाँ का टीपी? अबे आ गया बी साइड। भाई क्या कैम कर रहे हैं नूबड़। मर गया। कहाँ पे? बात Not half bad. लिटरली कैंप करना है ये नॉक्सी जैसे नूब पिंचो। इस तेरे को लेना था कोई। तेरे को लेना था ना एक लॉन्ग टर्म के लिए बीटीटी बैट और एक्सआर भी ले ले। शॉर्ट टर्म बता कुछ, बहुत हो गया लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म डॉट कॉइन है, मैटिक तो बहुत डॉट शॉर्ट टर्म बता रहा तो। हाँ गिर गया भाई, 4000 से 2000 पे आ गया। तब 1000 रुपए उठेगा ना, नुकसान गया है। गिरा जो है वो उठेगा एक दिन, समझ रहा है? वैसे तो मेरा रोज उठता है रात को, नेट लगा देखा। एक्सएलएम ले ले, एक्सएलएम स्टेलर। नेट लगा भाई। स्टेलर ले स्टेलर। ओ ये भी चीज ओनली आई कैन सी यू। नहीं नहीं नहीं, एम नहीं भाई। तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए ये गेम नहीं है, एम की तो बात ही छोड़ो। जी जी क्या ही टॉक्सिक हूँ मैं। ज्यादा नहीं बोलना, अभी टॉप फ्रैग कर दूंगा। अननेटेड में ना हाँ। कॉम्पी में सीरियस नहीं लेता रे। जब भी तो ठीक है भाई, ये कर ले, ये कर ले तू, ठीक ये कर ले। ले ले ये वाला SNX ले ले, SNX ले बे, SNX कितना है? भोसड़ी का प्राइस देखना पड़ेगा अभी। $7.3 ले ले क्या बोल रहा है, क्या हिसाब से बोल रहा है? ले ले, प्राइस नहीं देखा कुछ? मैं नहीं चार्ट देखा। देख रहा हूँ मादरचोद, प्राइस तो थोड़ी देख। चार्ट तो मैं रोज बिटकॉइन का देखता हूँ, पर वो लेने को लौड़ा 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 ले। फिर चार्ट देखे बिना ही ले लो, फिर मचाओ, बोलो गिर गया तो गिरेगा नहीं ना। SNX है 578 का है, SNX 578 का है, ले ले। 578 में थीटा ना ले लूं? थीटा कितना गिरा है भोसड़ी? थीटा भाई 700-800 जाता है थीटा। थीटा गिरा भी उतना ही है ना चूतिया। लेना है तो ले, वरना मार चुका है। मैं बता रहा हूँ तुझे कल का प्राइस। बोला तो सही SNX। पैसे भेज। चूतिया पैसे भेज में लेता। अरे मैं उल्टा लगाया फॉग। रुक रुक रुक, सॉरी। तो चालू करेगा अनरेटेड?
तो लगाया तो है लन, कौन गया? कहाँ लगाया? तेरा दोस्त गया ना भुसड़ी के माँ चोद दूंगा। मेरा वो दोस्त नहीं था भाई। एक मिनट, मेरे को ये वीडियो देखना पड़ेगा वापस। हिस्ट्री फिबोनाची तेरी माँ की तेरी how to utilize these levels. So starting from the top, you have your 0% level. Example, Fibonacci based key levels generated by the next. We saw the price broke through the resistance level. Why should you use this tool to identify pullbacks? Let me give you a scenario. So let's say that the current market is trending and you're looking to enter a position. Now we know that the best time to enter a position at a trending market is to wait for the at a previous key level. This pullback will end. It's widely known among this key level. How do we know when this pullback will end? And this is where the Fibonacci retracement tool comes in. So as I plot the tool onto our chart, notice that we now have these Fibonacci based key levels generated by the tool. And as you can see, the price hits one of the levels and bounced upwards. So it's widely known among traders that price tends to respect these levels. The tool. Note the tool comes in. So as I plot the tool onto our chart, एसेंट बोलते हैं। असंट ले मारा ला। I am both shield and sword. कहाँ गया भाई? कंट्रोलर बाकी है। Notice that we now have these Fibonacci based key levels generated by the tool. And as you can see, the price hits one of the levels and bounced upwards. So it's widely known among traders, price hits one of the levels and bounced upwards. So it's widely known among traders that price tends to respect these levels. Another example of this would be the S&P 500 market crash back in March 2020. So here, as we apply the Fibonacci retracement tool, you can see that the level predicted the exact bottom of the market crash. And now, I'm going to show you how to apply this tool onto your chart and how you can use it to find the Fibonacci retracements. Now for the settings, easier for you. Here, to open high before we are reach this point. Scroll to the right to extend the levels by connecting the swing low to the swing high. Swing low to the swing high, बेटे. Swing low to the swing high. Swing low से swing high लेना होता है. अरे मैं टेक्निक सीख रहा हूँ बे. क्या swing? Swing low, swing high. टेक्निक सीख रहा हूँ, तुझे नहीं समझ आएगा. क्या swing क्या आगे? Swing low और swing high. ये क्या है? कुछ नहीं. मैं सीख रहा हूँ ना, तो एक दो चीज चार्ट को रीड करना सीखना पड़ेगा ना ब्रो. ऐसे तो हर बार थोड़ी सब पैसे ऐसे हाथ में ले पॉजिटिव के सीखना. वही तो सीख रहा हूँ मैं. तेरी जैसे नल्ला थोड़ी बैठा मैं. मेरे से and then drag it to the right to extend the levels. बता रही है. Now notice that I'm connecting them at the end of the portfolio वाले हमें बता रहे. 5%. कितने का portfolio है? कितने का? कितने का है? बस 4000. हमें बता रही है. लवड़े तूने डाला भी इतना ना. मैंने कितना डाला है? Cancel your trade and look. बस 4000 डाला भी है, निकाला भी बहुत है. मैंने 4000 ही डाला. तूने खाली डाला है.
नहीं मैंने निकाला भी है ना बीच For में other 4000 डाला opportunities, खर्चा कर दिया उड़ा Now, दिया because when the serious a bundle tip for the right reaction as seen. एफ के कोई गोल टप्पर मार दे क्या अरे हम दोपहर में खेल is रहे थे ना what तब Fibonacci जैसे ही हुआ retracement था looks like. Nox So again, escape है। since it's bearish, the first step is finding a downtrend. And in this chart, we can see that the price moved downwards. Now, here's where people tend to get confused. If you look to the right, you can actually see that the price moved upwards before going downwards. Okay. And so the question is, how do we know that this Hello. downwards movement Obrigado. is a downtrend itself and not just a Yes. pullback as part of this uptrend? Well, the way we know that is by identifying the long-term trend using the 200 EMA indicator. And in this example, we can fact the swing. So as you can see, until the price shows a reaction to one of the levels. The next इसका नेट गया आ रहा है ये मेरे को एक बुक चाहिए रे लिखने के लिए पिंचू रुक फोन में लिख लेता हूँ व्हेन बेरिस देन टॉप यस अभी मैं कौन सा लो और कौन सा हाई बोल रहा था ओए क्या मैं अभी कौन सा लो और कौन सा हाई बोल रहा था Spike planted. किसी का भी ले मेरा मत ले Enemy spotted A. Shot down. One enemy remaining. यस मेरे को सीधी गांड दिखा के गई मैं उसके पीछे भागा है राइट में कैमरा मारो साले को रिपोर्ट मारो ये गया चैम्बर इंस्टॉल हो करके swing high and swing low when bullish pick swing low to swing high रीमेक करना है क्या हाँ कर दे नहीं खेलते ना डाल दे when डाल डाल very अरे डालना अभी भी टाइम है होता है क्या pick होता है 2 राउंड तक होता है क्या नहीं होता है क्या डालते हैं क्या डालते हैं higher low मैं डालता हूँ रुको lower Stay down. swing low डाल दिया करो 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 एफ हाई 30 seconds left. 10 seconds left. Noxy the beach what are you doing beach first. With these three candles consolidating, we can see that the price 100 EM 2% level, immediately followed by a big red candle that engulfs the price from the video. Always wait for confirmation. रुक जा अभी SNX मेरे को लग रहा है 0 तक जाएगा SNX कहाँ तक जाएगा पता है यार 7% मतलब 7 USDT कितना होगा एक USDT का प्राइस क्या है अभी 72 है इतना है कम क्या हो गया वही है 72 कब हुआ 75 ऐसा कुछ है Match कब क्या हो गया कब का हो गया 504 रुपए जाएगा तब ले लेना SNX 504 से मैसेज में बनेगा 504 से मैक्सिमम जाएगा 7.711 मतलब 711
270 अरे भाई यूएसडीटी का प्राइस क्या है भाई देखना और डले 78 है चुप 79 है 609 बात कर कॉपीराइट लगेगा तेरी मालूंगा कॉपीराइट लगाएगा तेरी गांड में पूरा डंडा डाल दूंगा बूम 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 चाक बूम भोसड़ी के ठीक है भाई ठीक है वेट करके एस्ट्रो भाई लॉक कर दो 553 to 605 तक जाएगा यस ये तो पुराना गाना है इसमें क्या कॉपीराइट लगता है बे भोसड़ी के सब गाने में लगता है और ट्रिपल एक्सटेंशन मर गया फिर भी उसका कॉपीराइट लग रहा है इसके क्योंकि उसका बैट 111 ओ बेंचो लंबा वाला तो जो मोनेटाइज डालता है उसमें लगता है क्या हाँ पूरा लगता है तो ये लेडीज वगैरह डेली मोनेटाइज डाल रहे हैं उनको नहीं लगता वो परमिशन लेके या फिर उनको परसेंटेज दे देते होंगे परसेंटेज देते होंगे उनको या परमिशन लेके करते होंगे उसमें होता है ना परमिशन होता है दे सकता कितना विड्रॉल चालू हो गया क्या तेरा YouTube का नहीं $100 तक नहीं निकलेगा $100 मिनिमम तू भेज कितना हो गया निकालता हूँ 20 $30 बैंक 3000 कमाए 20 बे 30 नहीं 20 बागड़े बे 3 साल से कर रहा है $20 मिले नहीं 3 साल से थोड़ी गिनना होता है चूतिया मोनेटाइज होने के बाद गिनना होता है मतलब कि 2021 का मार्च 7 महीने में 2000 ओए अबे मेरे को लगा जेट दिख रही है मुझे तेरा बीच में बोला एम ही मिल गया अस्त्रा लो है राइट पे उधर लो है एक गोली 55 पिट चलेगा हाँ तेरी गान में एक गोली भोसड़ी के 110 है वो मादरचोद हिल लिया होगा तेरी गांड हिल देने आई उसको मारा बे 78 में 3 गोली भोसड़ी के कोई हिलर नहीं है तो कैसे बंदा आया होगा वहाँ पे हिल करने उसको रीलोड कर ले अच्छा रेज को लगा तू भोसड़ पप्पू साला लंड तो मारना मुंह पे मार रहा है गांड में क्यों मार रहा है आज कौन सी मूवी देखूं बोल आज तो मैं तब वो देखा तमिल मूवी है देखा कौन सा रजनीकांत का आया है रजनीकांत भैया उसका भी आया है उसका देखो धनुष का नहीं आया भी है धनुष का क्या था वो जग में तंडीरम वो तो तेरे को समझ आएगा ना मेरे को थोड़ी समझ आएगा हिंदी में चाहिए भाई पीक देना पीक दे ओ लंड गैंगस्टर वाला है आ रहा अरे बहुत सड़ी के नॉक सिस्टम पे रेज लिया हां पुलिस कर रहा है बॉडी दिया मैं जेट केजे 78 बेंच Spike planted. ओए बॉडी इसको पता नहीं जल्दी क्या हो गया उसके बंदे ने उसकी गान मार दी भाई Let them try to get through me. क्या बात कर रहा है एक्सचेंज कर ना ना कर ना 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 जाएगा ले शर्माते नहीं है ले अपना भी दो ओ भाई रन एंड गन ओपी बोलते ओ हेलो ब्यूटी
Now they're dead. क्या बात कर? देखा क्या यस? वो वाला स्प्रे मिल गया मेरे को। कौन सा स्प्रे? जो मैंने मारा था अभी चैंपियंस का। और ये कौन सा स्प्रे? चैंपियंस। Here. There. रेज आके सीधा नेड़ फेंकती है मुझे। ऐसा ना गांड मारेंगे मुझे अंदर बैच। Flashing for you again. एक क्या रे नॉक्सी कुछ भी खेलता है तू। हाथ तू। तेरे बाहर बंदा आके मार गया मेरे को। ये जेट 70 खाया है। सी गया क्या? ए इधर देख लो। जेट सी गए बे। अरे लवड़े सी गए बे। Here. Spawn camp or what? 30 seconds left. Here. है तो spawn camp ही उनका। हाँ वो spawn पे कैंप कर रहे बे। Spike planted. Revealing area. There they are. Remaining. यार तो लेटर क्या बे? रेस होता दिखा देता। ए ब्रिमस्टन गायब हो गया। भरा यार। Enemies close. Eyes up. तुझे दिसंबर 3 कल रात तक 7.7 अंदर आ जाओ। लेना एक ही आएगा, खाली जेट आएगा। पिक ले ले मेरे को दे गया 608। यस कल रात तक तेरे को 50 पर कॉइन का प्रॉफिट हो सकता है। 50 पर कॉइन। फूल ही ओए तुझे बोल रहा मादर चीज। हाँ बोलना। कल 50 पर कॉइन प्रॉफिट कल रात तक अगर अभी लिया तो। Enemy remaining. Spike down. C. हेलो इधर भी साउंड आया था मेरे को। इधर बी में साउंड आया था मेरे को। इधर लॉन्ग तो था। लॉन्ग मार के गया। Scanning ahead. Reloading. ये रहा स्प्रे देख। अरे बहन से स्प्रे देखा ना ही रह जा रहा है। यस नहीं हो रहा है क्या जेट लग भी? यहाँ ठंड में गांड फट रही है। इतनी ठंड जिंदगी जान। कल का टाइटल है स्ट्रीम का। तो क्या डालूं? भोसड़ी के ये थोड़ी टाइटल डाल सकता हूँ मैं। Get out of my way. Ryzen bring. One enemy remaining. Spike down A. Flawless. This is worth celebrating. ये यहाँ पे आके डायलॉग मार रहा है। I have survived more than they can ever. Thanks. सुन तो फ्लफ यहाँ पे था। ठीक
यहाँ पे आया फिर बोल रहा है नाउ दिस व्हाट वी कॉल सेलिब्रेटिंग। भोसड़ी का मेरे बाजू में आके इसका डायलॉग बोल रहा है भाई। इधर वॉल कर दो ना, वॉल के ऊपर उसे वॉल करके दो। लौड़ा दो। I'm on my way. I'm on my way. ये ले I'm on my way. बॉडी बे ना को मार्शल। Right here. There they are. एक विंडो है, विंडो था लास्ट विंडो था। मार्शल या फिर ऑप लेने गया होगा ये लोग। No charges left. कहाँ है, नहीं दिख रहा। सीलोंग गया होगा, ऑपरेटर लेने गया। Enemy spotted A. Pulling them in. सीवर सारे है जब Need that back. लॉन्ग है, लॉन्ग। जाओ आप लोग, क्या जाओ। 30 seconds left. भोसड़ी। ऑफले ऑफले उसकी वाली ऑफले। ये अपनी रेना क्यों पहला। ये मेरे को दे नॉक्सी मेरे को दे। ऐसी वॉल कर देना। नॉक्सी मेरे को दे। Hey, yeah, good. Need a drop. Midasi. हिलाता रह गया भाई। Need a drop. Thanks. हिलाते रह गया मैं। भाई साहब, ओ भाई साहब थैंक्स। One enemy remaining. क्या सेज द सेक्सी ऑपर मरवा दिया राइट देयर। Help. Help. Nah. Help. Help. Yes. Together. वीडियो कंट्रोल इंटरफेस कम्युनिकेशन so shit. Right here. Enemy spotted A. Hey. Enemy spotted C. Thank you. कल निकाला मादर। Thank you. ये इधर 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 एक सी है। ये साइड आ गया एस्ट्रा। Here. गैराज एक गैराज। Spike गैराज। down C. Shock dart. भोसड़ी की तेरे शॉक डार्ट ने मेरी गन मार दी। ओ तेरी। Scanning ahead. एक गैराज आएगा, सो एक गैराज आएगा। मैं गैराज देख रहा हूँ। दोनों उधर हैं ना? नहीं ये इधर से मेरे को कोई तो मार रहा है। One enemy remaining. Shock dart. 30 seconds left. What will it be this time? ठीटा अभी तो Any गिरेगा patterns यस। emerge yet? अभी थोड़ी उठना है ठीटा को। ओए वैंडल कौन सा लगाया तूने? ओ चो दीदी को देख। यस क्या हो गया? गिर गया इंडिया ना? का प्राइस देख पेंचोद।
अड़ा की गिरा है वैसे लोडिंग उठा है कितना 300 हेंचो किधर किधर एडीए किधर कितना कितना बता ना 137 इनका स्मोकर नहीं है हैं दो लोग है सर मैं फ्लैश दे रहा हूँ साइड आ रहा हूँ मैं भी 37 क्या होता है बे 137 सीधा 1 पॉइंट कैलकुलेटर 1.5 into 79 118 से सीधा 118 से सीधा 137 37 137 बेंच 37 क्या होता है बड़े इंग्लिश में बोल 137 वन भाई तो 37 होता है 37 क्या बोल रहा है हिंदी इतना गिनती नहीं आती No. Long. Bat, defuse bat. Left. वो गन मुझे दे दे डाकू अरे मतलब डाकू के बेटे Thanks. मतलब तूने स्वीकार लिया कि तू मेरा बेटा है बेंच ऐसा फिर ऐसा 117 से 137 सीधा एक कॉइन पे 20 रुपीस प्लस बेंच तू ऊपर जा मैं नीचे से कर रहा हूँ जा भाग लोड़ी बहुत अच्छा आएगा माँ की आ गया स्वाद उठा ना स्पॉट चोरी कर रही है ओए नॉक्सी हैकर चूती है नॉक्सी हैकर लंड ईयर क्या करते हो तुम मारते भी हो राइट ईयर दोनों ही अरे मैं कुछ टॉप पे अरे नॉक्सी हैकर द लैंड मैंने देख लिया वो Last round before the switch. साले ने स्मोक में से मारा है केजे को क्या Need a drop. Thanks. अरे ऑफ मांग Need a drop. Thanks. मैं ड्रॉप नहीं मार सकता क्योंकि 3 बार हो गया तेरा अच्छी गई तो लॉल हो रही वो पीछे कैसे आ गया शॉट पे रैंडम बॉल शॉट पे ये शॉट पे ये बी में साउंड बी क्या बी रख भाई साइड में बी साइड के अंदर यस चूते किल हड़पने गया ये मारा बी बैक देख स्पाइक्स उधर पीछे लंड बी बैक रुक मुझे आने दे उसके पीछे से मैं उधर से निकला अभी Switching sides. बहुत लास्ट राउंड है क्या ऑप ले ले क्या नाना तेरे को नाना बोल रहा है अपनी गांड मराना तो नाना उसको ऐसा Nana. अरे अपनी गांड मराना No. थैंक्स बोल रहा है चल गांड मराने के लिए Thank you. Wonderful.
Wonderful. Reloading. Wonderful. Nice. Spike's here. I'm on my way here. I need healing. I'm on my way. Nice. I have the spike. ये ले गरीब Spike drop. लेके जा Enemy spotted A. पीछे Right there. 105 था अगर ये मर गया ना मतलब नॉक्सी तू तो भाई बी में गलत ये सीन है तेरे एक करना Need that back. On my mark. Right there. Enemy Last player standing. Spike down. C. ओह वाह ये ले खा ले लौड़ा Reloading. No. I'll take point. I'll take point. Yes. I'll take point. Enemy activity near. Forward. I'm taking point. बंगी एक क्या नाइफ लेके आए हैं करी गरज से पूछ रहा है तू मरना यस Here. तेरे पीछे 3 है बेंच अबे क्यों चला जा इंस्टेंट स्पॉटिलिंग थोड़ा पहले मार देता देखा ही बात है बैक इसको गलत ही ले दिया मैं हिल दे लौड़े ये बेंचो रुक 30 सेकंड है ये भी लोग है रोटेट कर लो हिल दे के जा ट्रेन आ रही है ट्रेन मार देगी मेरे को देख सवा देख One enemy remaining. ओ लैंड कर दो ओए Spike down A. ये राइट साइड है शायद व्हाट द खुद पे क्या 30 seconds left. Last player standing. लेफ्ट चल चुका था कल आना Win. Show me where to go. Right there. साले तेरे को हील ही नहीं देना था Got that. I'm on एआई तो नहीं on my way. फैंटम नॉक्सी को Nah. Watching here. Nah. I'm on my way. Watching here. need a drop. उसको ड्रॉप चाहिए We rush. I'll take point. Enemy spotted A. Found them. Enemy spotted A. Right here. Enemy spotted. ऑपर मदर चोद गैरेज में एक जन है ब्रो थैंक यू Spike down A. Reloading. One enemy remaining. ए पे रेज यहाँ से रिवील करे पे जाना चाहिए लो यहाँ से रिवील करे पे जाना चाहिए साइड Standing ahead. नहीं गया बाहर गया बे सीवर बैठा है कहीं नहीं है यहाँ से सेटल कर सोआ सचिन कर Last player standing. देखा बैठा था ओहो बच्चे सीख रहे हैं हमसे नो वरीज
क्या बात है ला? Reloading. ये नहीं वो ला। For you. हाँ चुतिया। Got that. Enemy spine B. Reloading. यस उससे पैसे निकलवाने पड़ेंगे अब। खास मत छूटिए, तेरे को बोल रहा हूँ। हिला और मेरे लिए नहीं दूंगा मैं। हंस और हंस। चेक कैसे आ रहा है? कुछ करिए। हिला हिला प्लांट बाद में हिला। मैं बोला था उससे पैसे अरे अरे आज में इधर था। Last player standing. और कान में डाल दे अपनी। Enemy remaining. क्या वॉल बना? उधर से भी दिख रहा है, इधर से भी। तो लेफ्ट से आ जाएगा वो। एक सौ चार था वो। अरे स्लो हो गया वहाँ पे। और गार्ड में डाली। तू हंसा ही क्यों? हंसा नहीं वे चिल्ला है। जेड आके डरा है उधर नीचे। मैं बोल रहा हूँ उससे पैसे निकाल, उससे पैसे निकाल। तू ले लेना लेकिन निकाल उससे पैसे। उसने म्यूट किया। ओए और डाकू से शेयर दे दे। निकाल। Gun here. Right here. सुन रहा है कि नहीं चूती है? वो कुछ भी लग गया। कुछ भी लग गया। कुछ भी मार। और कुछ लग रहा है नहीं? कुछ भी लग रहा है। एस है इसका, एस मत दो इसको, एस मत दो। अबे उसको बोल रहा हूँ गैरेज में तो फिर भी भाग गया। देख अभी भी चला गया। कुछ भी लग रहा है। I have your ace in my hand. Look. कहाँ है? पोटड़ी के पैर तक कुछ भी लग रहा है मेरा। आज ले जा रहा है तब कुछ भी लग रहा है। अरे मुंह पे आ गया। तो भाग जा मर जा। ऐप खोल रहा हूँ 4 टपली दिख रही है, एक भी बॉडी शॉट। Thanks. Good. No. हट। तेरे को निकलवाने की नहीं? इधर देख, इधर। मैं कैसे निकालूंगा? तू देता क्यों है मेरे से? बिना पूछे देता क्यों है? वैसे भी तो तेरे पैसे है, मैं क्या करूँ? मेरे कुछ पैसे नहीं है, तेरे पैसे हैं। तेरे है ना? मेरे तो मैं पैसे तेरा 500 करके निकाल रहा हूँ बे। हाँ, तेरे है वो। अबे उसको सुन, मैं ये बोल
planning in that right pyramid. अब आएगा ना bro. That's close. Nice both Yeah. Guardian. Tens. Oh, he can't get anything done, Marzen. भाई dominate तो हो रहे भाई. Sentinels वाले भी dominate तो हो रही. Supporting his teammates, trading out, and it was a force buy. So Sean, yeah. Sentinels win their first pistol, but actually it kind of plays against them, doesn't it? Yeah, they don't like plays against them, doesn't it? Do they, Dan? And this was a round where it just seemed like they were trying to flex their confidence that they ended that first map in, and it bit into mid, and Furia hit some nutty shots to punish them. A site was lost so quickly. Yeah, Furia have a great sense of where to take, but they understand where the map is weak quite quickly. Why you look be They want to go very quick into this B site. They've got the wall up. Two players here. Can they make the entries work for themselves? Okay. Flashes to follow as well. Still though, Sick holding with that frenzy at the backside, but surely not long for this world. So many players coming through, and indeed, it's going to be Dapper to be able to do something. Only peeling off one, it just have sneaks to the back lines, but just with the classic, will get denied. And one by one, Sentinels not able to find kills that they're looking for. Just like that first map, Tens is just looking to get his ult orbs built up on this Marshall. It's pretty unlikely they actually, I say that, but 3 of these players can die from one Marshall shot, Dan. It could happen. All kind of intermittently going up and down, causing problems, and actually Khalil on the Killjoy, making it happen there. Almost a flawless, not quite, but 4 players survived, which is certainly key, because of course in the Sentinels they force bought against Furious force buy. And the force buy wars have been won by Furia. I feel like I'm in some kind of force buy inception. Just everyone's force buying. You know it. Oh wow. How does Sentinels approach this gun round, Dan? Because we have seen them play so aggressive in middle, and this is different, because now we have Shazam by the close A mid doors, we have Zoms locking down this A site, but again, we have Sick playing a bit aggressive over on B with a Sentinel player in Dapper. Very interesting combo. Fall back. This is such a different look. Typically had Zoms nesting in this B site, and they allowed Dapper to play Killjoy, actually, and play the A site. Such a different look that Fury is dealing with. They're trying to scout out the map, just get a feel for things, see how Sentinels are set up. You can see this is now going to be shifted towards the B site. So Viper has clung onto that wall, and you can see QCK is going to make his way over to B, where he's going to put that wall up. I'm curious if he does the same one as last round, Dan, or if he goes through that half. It is, it's the same one. And they're the Seekers as well. That's going to help them discover exactly where these defenders are. 2 on the site. After playing close to the pillar, wants to try to get these forward kills, and will be stuck in the snake bite there, unfortunately for him. And Sentinels वाले का मैप नहीं लग रहा है ये. Comes through from Furia. Viper's pick comes in, but Tens, he tries to get ahead of it. But again, देख तो सही क्या dominate हो रहे हैं. Completely gone because of the Viper's pit. They're going to have to go into it. भी comeback करेंगे रे, वो देख रहे हैं game. Catches it before the spike goes down. That's a huge kill. Now time is against him. Kill on that flank. भाई केजे हमेशा back से. It's up to Tens, and Tens just again is such a coin flip in the Viper's pit, and Exan will take full advantage. 3-1 lead for Furia now. Man, I don't know what version of Sentinels we're seeing right now on the defensive side, Dan, but it's lacking all creativity and imagination. When I watch Furia come into the site, all of their utilities synergize so well with each other. Right? Zan creating space, the guiding lights coming in from Mazen, the wall coming in from QCK, everything is perfect. But when you look at Sentinels, पर इनका सिर्फ चलता है भाई. अपना तो भाई पाँव छू के भी निकल रहा है. Everyone's taking individual fights on Sentinels, and that ended up working in the first map because their attack have bailed them out. But if they start ये क्या डार्ट मारा है? Could be rough. कहाँ पे? Yeah, we have like we saw last night. बाहर साइड के बाहर. Ended up working in the first map because everyone's taking individual fights on Sentinels. अच्छा जो pick दे रहा है वो दिख जाएगा शायद. Seekers are available for Sick, for Sentinels, and they want to try to go for a retake with them. They're already close. Here, Sentinels looking for the frags, but we have a beautiful display from Furia on this defense. Tens looking to wrap around. No HP. Can he find anything? No. It's the Prime Gaming flawless coming through for Furia. And once again, Sean, just like I said, it's a strong start. The question is, can they keep it rolling? Yeah, they're going to need to keep it rolling right now because this is an attack-sided map, right? Ascent,
I can argue it could go either way, right? But Breeze, it's such a big spread out map that you can really abuse the rotation. Saudi Arabia की team है. Viper wall to cut off massive sight lines, and you can just bleed out the defender rotations. अपना कब आएगा बे प्राइम Being up गेमिंग 4-1 seems fantastic, but Sentinels could प्राइम का easily सब्सक्रिप्शन rally लेके back and put बैठे them in a हैं horrible spot to end this first half. Oh, we might just get a straight contact through to this B site. Things just, in fact, yeah, absolutely going for it. There क्या goes घुस रहा है क्या घुस रहा है Exam being good at creating space for the team. ऐसे अपन घुसते तो अभी पड़ गई होती अपने को देख know that देख Sentinels भाई are everywhere. मुंबई सर्वर में क्या है उधर लेफ्ट और राइट दोनों चिपक के बैठते हैं ऐसे घुसते हैं वो पार्ट से पड़ेगी अरे लेकिन एक्चुअली ये लोग रीटेक खेल मेरे देखा है मोस्टली ये चीज अपने मुंबई सर्वर में होता है ये एंट्री नहीं ले पाते हैं This is a scenario where in the past, हमारे में क्या है लेफ्ट और राइट बैठते हैं अगर ऐसे घुसेंगे ना तो वो स्पैम कर देंगे स्मोक में this retake is going to be incredibly difficult. ये थोड़ा दूर-दूर बैठते हैं ये रीटेक के लिए That's going to make it nearly impossible. देख सब दूर-दूर बैठे हुए हैं Yeah, that toxic screen going up again is really difficult to deal with. Sick is making some noise there on the flank, so they know that flank is compromised. But on the front, QCK will get all the kills from backside. Beautiful stuff there. Speaking of which, Sick able to get some damage in, but there's just simply not enough left. Furia, fantastic round, great take, and abusing, as you said, the fact that the toxic screen was already in play for Sentinels on the A site early on. Yeah, it doesn't look like Sentinels has any answer to this B. ये एंट्री लिया और मर गया क्या क्या only होगा prepared to दिखा stop नहीं A इसको hits, which is typically where the attacks happen on Breeze. Unfortunately, you have to stop the B ones too. You gotta stop them both. And this B site is under siege right now, and that's gonna open up the playbook for Furia. If I'm IGLing them right now, ऑफ लेके ये ऐसे घुसा है we could just keep going. नहीं बे अटैकिंग साइड अपनी थोड़ी है अटैकिंग साइड तो फ्यूरिया की है A site in rounds like this. Tens to defense thing, you know, we've seen Fury oscillate between A and B on the अच्छा वो this पूछा time था Tens does have that blade storm. He will be likely coming मेरे को लेफ्ट में दिख रहा है ना ये so he wants to get that action in early and get the kills in early. We'll see if he can find रेड का राइट something. पे मेरा फेस कैम बंद कर दूंगा तुझे मैप समझ आ जाएगा The पूरा updraft. Tens able to take down three quick kills, quick succession comes through for Sentinels, and there's little response भाई सेक्सी को right now from Furia. They are in a lot of trouble, and there goes the thrifty in favor of Sentinels, and they're going to pick up a lot of वीडियो guns. किसने डाला अपने चूतिए तो लेके भाग जाएंगे स्किन और स्किन This is like the same formula as Ascent. I feel like we're on the same formula. Tens Bladestorm comes out, huge round from Sig. Tens, Zoms, everyone came up so big from Sentinels. भाई टेंस का वो मस्त आया मर्ज We have mentioned टेंस का सही है सेंटिनल्स में but you Zom का भी सही है Zom blown वर्ल्ड out of the water. It's not that attack sided. सॉन्ग्स तो था ही ना Furia has a lot to work with. अरे नहीं lockdown. उसमें ये मर्ज मस्त है सेंटिनल्स tons of का success when Killjoys aggress into A halls and use it aggressively early round, or push up B. You know, use it in the middle of an execute as opposed to start the execute. Rounds like that seem very successful on Breeze, so I'm scared if I'm Sentinels right now. I'm gonna probably be, resorting to if they have a deeper gameplay than the one we've seen so far. हेडफोन्स में भी लगा रखा है They're going to have to resort to that. Yeah. No, I totally agree, and I think it is interesting that, yes, as you say, it does look quite similar to the way the first match started in this series. But indeed, the looks on the defense are certainly struggling to see hope in terms of a consistently good approach from Sentinels so far. Of course, there's still the rest of the half to play out, and we'll be kicking it off once again here. 5-2 in the lead off Furia. This is tried and true, right? I mean, the difference would be that Dapper's on Cypher, so now he can loan his trip over there to the doors lurk in halls. So he has one trip over by tree. Now Zoms is on this B side. Throw the poison over that B main, he'll have the reset already, and actually, if you look at that, the ult comes out right off the rip over there at B. Yeah, the response here will be very interesting. How do Furia want to handle this? First, we have this challenge. Oh, the angle for Tens finds the perfect timing. Couldn't be better. Couldn't be better. Yeah, that was very risky. Playing with the drone. Catching the timing on X, who actually has the Blade Storm as well. What a huge find. And now it's even worse. Because Viper's put his down on B. उधर और लेने की जगह पे ट्रैट लगा के ए पे we can see them gravitating towards और लेने की जगह पे ट्रैट लगा के अच्छा Khalil takes the fight. That was a pretty good fight to take, but unfortunately it does not go Furia's way.
Yeah, and that's सारे actually, I केजे believe, लर्क Shaz's करते हैं ये first सऊदी round अरबिया game, वाले so हैं he's on the शायद। board now. And नहीं the सारे elbow भी lurk Middle इसमें is on ची Fury. का भी है वो So भी that's लर्क their करता poison है orb. They get हाँ behind it. वो They भाई take सब the angle सब into केजे nest, push मतलब Shaz लर्क off, भोसड़ी वाले सारे। recollect that orb, and now pushing him back a little और bit तू more. साले जेट लेके लर्क करना But again, as गेम it's a जीता 3 था ना versus वो 5, अपन or डिफरेंट I should say रेंज 5 versus 3 from Sentinel's perspective, they don't have to do anything जैसे crazy here. They have eyes on every टेंस की तरह position. घुसने का स्मोक करके आई सा सीधा वो टेंस नहीं था ऑफ लेके All of that वो works कौन quite था nicely in जांड this scenario. जांड जांड ने गांड जांड नहीं ने दिखाया दिखाया Going to गांड save their जांड ने weapons. अपने गांड नहीं दिखाया इसमें। Yeah, they don't have दिखाया time, ना or they don't have the right utility to even deal with this क्या Viper's हुआ pit, प्लान to ट्री be करने honest, गए right? इनको If they had the drones नहीं still कर on रहा NTR, if his recon recharged a little bit earlier than it just did, नहीं if Mazin करेंगे didn't lurk through halls and had a trailblazer देख रहे still हो? guiding lights, it could have been done. साइट में नहीं But घुस in a पाए 5-on-3, like you सब mentioned, खौफ। you know, you're probably better off taking those अब weapons in अपनी the सेव next कर round. पैसे नहीं Smart choice there from Fury. They're looking at the long game here in this half. And I think, you know, Saints, based on what we यार saw in the टेंस first का मुंह map, देख नीचे। that could be very impactful if they have good buys late in the half. Yeah, totally agree. And I think this was a great fight Slow from motion Mazin. You're range. behind, you've got no map control. You have a 1v1, that's great. Yes. But as we said, doesn't go his way, and here we are. 3 versus ये हमेशा 3 to river 5 ही versus लेता 7 है। on the scoreboard. Sentinels on the comeback. ये Dan, this is different. These players look like they're going to go fast to the A halls, and this. अपने पास तो है ना Yeah, that's an early pick though from Sick onto QC at the B window. They have a River zero के control shot बहुत utility. अच्छे Dan. This is connect about to होते get हैं real scrappy at the A site. Yeah, this is a problem. This is a really huge प्राइम problem. ले लो आइडो फ्लेम ले लो कुछ भी ले लो रिवर ही तो रिवर है रिवर ही खेल है सजम के पास भी वही है Shazam doesn't have to do too much. नहीं कोई ओरिजिन खेल रहा है वो तो टट्टी है Exactly वो where सोने वाला Sky has to जैसे be. सजम भी रिवर खेल रहा Where's that है peak? ये It's देखो delayed! आए And Xan actually takes down Shazam. The bait and switch pays off here, and they'll trigger the push into the A site. And it's just up to these gunfights now as we see Sentinels trying to hold on to the pyramids. कौन बड़ी देख इसका पर्पल में देख Large and in अरे वो charge, but not for चैंपियंस too का है much लास्ट longer. वो लोग जब जीते थे ना वो वाला है 2 versus वो 3 for Furia though, still a lot of work to do. And there's another frag. ये रहा वो goes down. ये देख नजर Evening things up. उसके Dan, पास we're भी not वही a है 2-on-2, but this flank from Sick is so सिक के पास भी timely. वो जॉम्स के पास भी सब रिवर ही खेल Other रहे side of हैं pyramids, though, I think they have a feeling that River someone is तो on the river flank. है। They're pushing लेने का aggressively है towards defender नाइट spawn. मार्केट में आता है ओह That's a flick and a half from Zoms. Leaving Xan 27 HP left. You're going to get hit by the Seeker. My gosh, there's nothing you can do. भाई वो क्या शॉट था Spot 4 to 5. And indeed, क्या शॉट ऊपर से दिया है क्या दिया मस्त दिया ना फ्लिप था एम लॉक तो चूतिया इतने पैसे होने के बाद भी ये तलवार लेके खेल रहा है देख Nice here if you're a Sentinels fan, you know, clawing back into ये अभी अभी आया ना Still find themselves down 4 to 5. ये but तलवार it बैटल looks पास like का they've है made that अभी का shift थोड़ी है on लास्ट their बैटल defensive पास half. का है The one that we saw on Ascent, the shift अभी here तो वो though, वाला है ना is quite different. It's the इसका होगा positional लक की shift. They तलवार moved Zoms over to this B गान में side. डाल के I can see him मारूंगा right now on the minimap actually setting up his अभी wall तो there. ओनिक्लो So जैसा है the वो वाला difference है in looks has clearly affected Furia a little bit here. They're getting caught off by the ओनिक्लो नहीं timings of एक वो certain आया था ना agents on अलग different ओरिजिन टाइप locations. So yeah, big adjustment coming out of Sentinels to get to this point. ओनिक्लो अलग ओरिजिन जैसा coming through from Furia, because again, and speaking of adjustments, you know, in Valorant you don't get too much time to make those adjustments, and Sentinel's adjustments, switching Viper defensively over to B, that मस्त भाई जो रेड बुल लेके बैठा है खोल के पी पे वो मस्त मजा आता होगा ना यार रेड बुल लेके ये देख ये कब भी रेड बुल के without that util to deal with, Furia have कौन सा nothing right now. So what do? It feels like going into A देख is not Zoms what they want to चूतिया do against the likes of Tens and Dapper. So is it ना about ये mid तो control? दूसरा You know, वो how है do they try to find the pick by pressuring जॉम्स mid का around मुंह that तो mid थोड़ा rounds? मोटा है That's the question for me. Like, what is the adjustment? You can't just let Sentinels have this B control, because that's what's working for them. कितनी लाइव Yeah, हुई it really feels like Furia had Take a a look, lot of like. focus early on mid control, and then they'd fall back into these B hits. The B hits have slowed down a lot. ये They're लड़ने को not देखना। working as well as they were earlier in this game, but we still see this same mid control default. I see the देख Viper इसने lining up रिवर poison ऑफ लिया orb for those doors एक up बीप in घूम halls. रहा है एक I मिड see Sky दो over मिड her घूम elbow, रहे the हैं Jet and Silver going for mid control. जेड मिड Furious कंट्रोल ले रहा sticking to है the tried and true. They're working दो the map. सेंटिनल This is what has worked for them thus far, and they're going to continue doing it. ए पे ऑफ लिया बेटे हाँ, तो ऑफ यार लिया अभी देखो जेट Zam's गया normally been पिच the देख player spotting from that position. बे टेंस पे लाओ बे हाँ Tens with that आ पड़ी This time by NCR, so that's some revenge. 5 versus 4, it's the ये जो ideal करा। dream
Sean, on the attack, you got the whole round left to play. इसको मैंने Optix सिखाया नहीं ना. You've taken out the player that does all the prodding and all the annoying stuff अभी you तक have क्या to worry उसको about एंट्री if की you're that प्रैक्टिस दे attacker रहा हूँ मैं. ideal. So you can लग see करके now, कैसे खेलते. now that तो Fury बहुत knows आगे this, से they're खेलते. in this तो मैं man-up लग scenario. करना सिखा रहा हूँ. They've pushed back A with the Killjoy utility. They know समझ रहा not है? to push there. They push back A halls with the Poison Orb. They're quickly grouping to एक this जन B जो hit. है And they साउंड need दे to के do it पहले fast घुसा. because if you look at Sick on the कौन minimap, था right, ये he's pushing through जेट walls. और He's इसके getting इसके all बाद over. Shaz इसके is बाद already सोवा on आया. the उसको side. पता है वो साउंड सुन के And Zoms is here as well नजर with हटा his लिया. wall up with the orb there ऑफ as नहीं होता well. तो वो मार देता. This has to वो be देखता है उसको explosive. पूरा भी मिलता है. It certainly does, and they've been able to do that previously, but the snake Ah. by stayed lasts forever. It feels like that. A couple frags come through. There's the 100 Nacho, streaks. दो तलवार वाले भैया. You love to see that kill. तलवार वाले Leading the भैया. fire. There's actually nowhere to stand. And आया they- जेट आया जेट. I don't know how Dapper does this, but will be fine. डबल comes पिक. in, and it's ऐसे a पिक देनी prime चाहिए. game अपने यहाँ तो force out of चूतिए वो Fury at the भाग moment के. when they needed it the most. पता नहीं क्या ही Yes, खेल. that's gorgeous. I love seeing the paired ultimates from the initiators. Right there we saw the Seekers. So the Seekers go out, there's 3 of them. They're going to find, each of them find a separate player on the defender team. And this Sova pops the Hunter's Fury, and all you need to do is just follow the Seekers. क्या लिया सजाम Just ने बे? aim where the Seekers are going. Yeah. That just seems like an नहीं, OP Sky. combo of ults. नहीं सोआ. Well, like you Sky said, तो वो ults were खेलता है. used there, but we do have Blaze Storm, we've got Sick. Viper's Pit, we've got the lockdown still. I don't सिक believe तो we've seen योरू the सेक्सी खेलता है. ये कहाँ आ गया ये No, भाई. have it. डैपर खेलता है आई थिंक स्काई तो. Let's be on the lookout for Dapper that. You can see Cypher he's main. lurking in these halls right now. I've seen a lot of Killjoys use their ults up here. He's made his way to the door. 4-6 हुआ Oh बढ़िया. dear, does he put it down right here, Dan? 6-6. Good question. I mean, Sick has got a lot of control in mid at the moment, so Oh, this is very, very aggressive. The Killjoy with the lockdown in hand goes up to the trip, and there's the ult that I was referring to. So he puts the alarm साइफर up का on the काम trip, का नहीं है just भाई. ये secure की जगह his ult, चैम्बर का वो and होना his तो वो teammates are gonna डिटेक्ट go कर with लेगा this. स्पॉट. Look, it connects perfectly Chamber to या the बॉडी भाई इसका- उसको बॉडी देख. screen. Dan, this is so जैक drilled. सेक्सी खेल रहा है yeah, भाई. that's actually gorgeous to see. It's playing out there from Furia. Shazam will get delayed just a little bit more by the Nano Swarm there towards heaven. Sentinels waiting, trying to coordinate themselves for the retake through door, through spawn. बॉडी भाई. Exam finding some good damage with those daggers, and Khalil as well gets one. Shazam picks up a double, but there's a Viper's Pit still yet to contend with, and he does not have a drone to go straight into it. Into the Viper's Pit, and it's just tens now. What can he find? 3 players. Gets himself Ooh. around the back, but Marzin with a very fast headshot to respond. 7-4, and it looks like we're diverging from the script of map 1 finally for Furia. I think so. Furia busted out all of those ults you were talking about, Dan, in back-to-back rounds. 2 on the B round, 3 on this A round, and dang, did they look clean in these rounds doing so. I mean, I just want to draw attention too to that really cool aspect. The Viper drops the ult right there for that last kill. They know Tens is lurking in the ult, so she just drops the ult. Found ya. Real cool right there from Furia. But this is the round where they have no ults to work with, and we've seen Sentinels have a lot of success on these rounds, and we're back to it. Well, oh, interesting. So we'll get the picks going both ways there. One walls, and then one towards Dapper, who's actually pushing. मैं चलो रिपिक बी पे लेने जा रहा हूँ वो देख तो. What does that tell Furia एक और about था the उधर. Ace? हेलो. This is very aggressive from Shazam. He can hear a lot Shazam को बोल ऊपर से कैसे गिरेगा. deep in attacker spawn, where attackers typically wouldn't. तो पता है ये आधा घंटा कैंप करेगा. कैंप कर रहे So तो I think Shaz अब is उधर getting some चलो. early comms here to his teammates, and I would expect Fury to be मेरे going को देखना है into a कैसे stack गिरेगा या site नहीं here. ऊपर से. नहीं. I feel like साउंड नहीं देगा. वो it's लर्क so कर on the रहा है edge तो of the- साउंड क्यों देगा? Okay, now he's certainly, surely, he must have heard. Yeah, and you can even see Zoms is kind of like leaning a little bit फिर towards उसका है तो सजाम Tens has गया. actually left the B site. He's dashed back towards it. He used his dash to get into B. Maybe he didn't hear him mid after all, but with that said, they still have to breach that B उसके ड्रोन choke ने point. And सिक को it's नहीं not देखा looking देखा. great right now, because as you say, Tens is now in position, and they're going to go back here. ओ बेंचो Tens गया. Catches Shazam. What does that tell them? They've got 20 seconds to plant Tens the गया spike. Tens गया Tens This is गया. a huge map, and they have to run all the way around. We've got the catch here अब in जा spawn as अगले. well.
What on earth does this mean if you're Sentinels? They have to work this one out. In fact, Zombs will go forward and find another one. But where is the spike? इसको नहीं मारा है, इसने आके मार दिया सबको. खलील बेन से गान तो मारता है. खलील वाली गान में खलील वाली है. But there might be a player there. The wall's going to drop Zombs. उसको दूसरी पिक लेनी थी उधर. एक पिक लेके छोड़ दिया. The spike is planting. Zombs can't quite find an angle on it, and there's the frag. QCK walks it in. What a crazy round! What a crazy finish the first half. Furia 8-4. I can't believe it, Dan. They won one of the bleed out the clock type rounds. This is what Furia has been lacking all series long. They are massively in the driver's seat right now. 8-4 lead going into the defensive half. Well, we want to take a quick breather. It's time to go back to the desk to talk about that half. Thank you so much, DDK. Early on into that half, we all turned to each other and we said, what's it going to take for us to feel confident in Furia going into the back half of this map? And 8-4 was the answer, and they found it. They found it. I mean, this was a really good half. A few key tactical mistakes in there, but otherwise, Dash, they were great. It wasn't just the fact that they were great. You know who was very, very great? And I know that is not a phrase that I'm going to use as English pronunciation anyway, shape or form. Khalil. I think he ended that half 14-5 on the Killjoy. The man was unstoppable. And I know we usually look to the Jets here on Breeze, but the story's being told by the Killjoy here. Yeah, top frag map 1, top fragging so far here on map number 2 for his team. It's the flanks. It's the way that they're utilizing him. And we saw there in the final round there as Shaz is rotating, getting caught off guard without his gun out because Khalil is positioned phenomenally. Yeah, this is a 10s. The two of them were finding the kills here. Yeah, the back half was where I really felt that Sentinels caught their form. You heard the boys on the casting desk turn around and go, that looks shaky at the beginning. I mean, this is a Furia map pick, so we do expect that. अगर ये मैप जीत गया सेंट्रल तो खत्म आ गया. Just continuation spray. He expects a trade fragger to come forward, and they are committed. क्या क्या मार रहा है? क्या मार रहा है? कौन? खाली वो नहीं गार्डियन लेके क्या मार रहा है? Without scope. बिना स्कोप. अभी रिप्ले में दिखाया नहीं. खलील का रिप्ले चल रहा है. देख भाई. Not many teams in Valorant. They did it, and that was successful. Yeah, this was something that I had. Yes, it's not just that. Awesome, and now he's playing a little bit of it where he wants rounds on a set, so there was no reason for them to force, but this is something they are very keen to do, and you can see why, especially on the attacker side. It makes a lot of sense. This is their side. This is where they have to get their, their work done. They have to come through big, and there's no better way to do that than to catch the other team off guard a little bit, grabbing some bigger guns off of the opponent's anti-eco. Now 8-4. भाई ये डिस्प्ले क्या था? दूसरा डिस्प्ले क्या था इसके बाद में? Sentinels out there. दूसरा उनका डिस्प्ले था. Up as time goes on, as they figure you out, and now they move themselves onto the attacking half. We're gonna head back over to our casters, DDK and Sean, for the call. And we are back into the second half. Furia, they are threatening Sentinels very much right now, Sean. 8-4. It's a huge first half, but अब देखना है ये क्या एंट्री ले रहा है. Yeah, on Sentinel's map pick nonetheless, Dan. But Sentinels, we're gearing up for a fast round here. Zombs is going to throw his poison orb in halls. He's going to go halls with Dapper. This is going to be a fast A split. 2 people are going to go up Sands. 4 बंदे mid. 10's picking into the site. If you look at Furia, they fast retake. There's 5 people here, Dan. Oh, they might actually catch him. Get to the cross angle, and actually that's really interesting. Maybe even if it's he's got that sheriff doing the damage, dashing back, but Furia trading quite nicely, 3 versus 3, and in fact it's now Furia. There's one man to the good, and this is just deathmatch right now between these two players, these two teams. Oh, 10's edging forward, gets caught in the open, and Furia pick up another pistol round. 4 बंदे कैसे लेके आ रहा है वो? 3 of 4, 9-4 right now in this map, Dan. Massive economic advantage on this round. Sometimes you see teams force buy on the second round if they get the spike down. Force buy? Sentinels is in a scenario right now where they would have to make a really hobbled buy if we're going to buy here. Yeah, they're not going to do that. They're saving. They have a Marshall on 6, Sheriff on Dapper, so they're making light purchases here. Normal है. Minima है कि minima है. Cyber है. And we've got the toxic screen set up on B.
for Furia to नहीं defend. नॉर्मल लग रहा है. I really like that actually. They've shifted it over a little bit to the right so that way it fully blocks all the way into mid and leaves the gap along the back wall of B. That's very interesting. Yeah. Yeah, that's a great spot there. Someone's creeping forward. And Fury don't have to do anything fancy here. Ooh, Dapper has a great timing right now at B elbow. Then he went right by the Trailblazer. Ooh, but he doesn't take it. He falls back. And meanwhile in Halls, big presence being made by Zombs. He gets taken out by the double damage shot. Brutal. And there we go, some of the numbers whittled away for Sentinels. So there is certainly strength in numbers when you're in a buy that is disadvantageous like this, but Xan has got a good timing. So good lick of damage there onto Sick as well. And has that forward position, shutting down the choke point. Such a difficult play to deal with in a scenario like this. Insane, but Sick is just as insane. What a shot. Okay, Sick. We'll try to reset. 20 seconds to go. ऐसा कोई आएगा एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा पता है. अरे लेकिन उसने किया कैसे हवा में? क्या हमारा डैश और अफ्रा उल्टा. Oh dear. तो मुझे भी पता है उल्टा करते हैं लेकिन this is a disaster and this is so well played by उसका हवा में Fury वन टेप लग गया बताओ. कौन सा? सजम का किसका लगा था? सजम ने मारा उसको मारा सजम उसको मारा. अरे लेकिन इसकी हवा में गन निकल गई थी देख. सिक ने मारा उसको. There it was all along the turret. Oh, he doesn't get it, Dano! It's tragic. Super. The embarrassment, but more so the lack of money. I don't know how that works. I thought that had to be a no scope. Yeah. But he somehow scoped in on that one. Yeah. I don't understand how that works. That but was crazy. His reward is to keep the marshal for another round. वो क्लासिक का राइट क्लिक कर रहा था उसको लग रहा था वही कर रहा था क्लासिक राइट क्लिक. हाँ राइट क्लिक कर रहा था. There's a quick push there, and it makes a lot of sense. They're on these SMGs still. नहीं मिनिमा थी ना राइट क्लिक कर रहा था. This fight mid is certainly a good one to take for Furia, and it's a 3v3. And they're still on these specters. Now they're starting to find themselves in unfavorable fights, as we can see there in mid. So it gets the upgrade. This is where things get really tricky for Furia because it's such a big map that once you spot one of these two players, you can probably just go to the other site blindly, or you could just go into that player knowing that the second isn't anywhere around him. So Sentinels have a massive advantage in this 3-on-2. It's even more of an advantage than some of the other maps in the pool. Yeah. I agree. And with the Spectres still a bonus. Caution here. आगे नहीं आएगा वो उधर ही खड़ा है. प्लांट करने देगा. कुछ तो मिल जाए. That one shot potential. कुछ तो मिल जाए. Of a Vandal, a Sheriff. देख. Very good timing here from NZR though. See, Sentinels is pushed up aggressively. They have no one holding the flank, which is actually where both of these Fury players are coming from. बंदे पाछड़. क्या ना वो नर्लिंग वो देख रहा है जो. Recon available and 2 shock darts. लौडू नीचे क्यों देख रहा है? इसको देख. ओए ज़ोन को सिक को देख These guns out of the Sentinels. वो देख बैक स्टेप कर रहा है. And Fury only need 3 more rounds. So doing economic damage is massive. ये क्या? Yeah. Khalil will fall there. One more कहाँ गया वो? बेट में रहता है. He's not getting lucky. These players are all exiting. गया ये भी गया. तो उनका किल लेने जा रहा है. क्या कर रहा है? पकड़ा गया. We found a safe exit. उसको किल लेना था लेकिन नहीं देना भी नहीं था और लेना भी. Absolutely safe. किल लेना भी और देना भी नहीं है. इससे कैसे चलेगा वो सी? अच्छा 60 मीटर दूर था वो उसने साउंड सुन लिया देख सुना. So that was sort of by design. Yes, and इतना साउंड आ रहा है उसको. Tried to make that as messy as possible with that mid push. And I think they're going for so more of the same. भाग के गया ना वो 50-60 मीटर दूर था इतना साउंड. वो देखो पेड़ पे ऑफ लेके खड़ा है लन. Double elbow at the start. ये सब हमको दिखती ही नहीं. नहीं दिखता है. And have very fast retakes because of this. Oh, some information there. Mid-rush. Both teams, Sentinels will realize there's likely something going on mid. Team side, doll. Lurking their way up A halls right now. Dan, they're going up to the door. There's no trip, no alarm bot, nothing stopping them. There's a recon. गया They get a tag. Beautiful QCK picks up one, and they've got that मस्त mid बैठा है. control. सोवा उधर मस्त बैठा है. Xan is in the door or around the door position. Reveal करो, चौक ठाट So मारो. right now Furia in a great position.
पुश कर रहा है उसको, पुश कर रहा है, वो कर रहा है ड्रोन. Know exactly where he is, surely. QCK though can't take him down. He's spraying forward. NCR with the trade. 4 versus 3 in favor still Shazam. He's picked up a Hunter's Fury now. He has that Hunter's Fury. The Viper Wall still online for Zombs. A very, very aggressive Viper Wall too. And Sentinels has all the control behind it. That's a lot of positions they can be in because of how pushed up this Viper Wall is. Hunter's Fury back in that stance position. He can ult the plant, he can ult the run in. Many options right now for the Indian leader, and there it is. Oh, now they're actually going to be able to dodge this one. Perhaps another up jump comes through to do that. And Tens is just making quick work of these players. Tens ko dekh chad ke mara Tens in all of the madness around the Hunter's Fury. Tens will strike, and that's another round for Sentinels. It was close, but it's a great recovery. Jeez, yeah. Dodging the Hunter's Fury when Tens is hunting you down. Imagine that. Imagine. Doesn't sound very fun. That's hardly fair. No, it's not very fair at all. Those look like free kills for Tens, thanks to और जो भी लोग खेल रहे हैं इन सब ने चैंपियंस बंडल नहीं लिया क्योंकि इनको फ्री मिलने वाला है. Much needed first gun round there for Sentinels. And you can feel the momentum starting to build now for Sentinels, right? They're still very far behind in this game, 10-6. तो सबको फ्री मिल रहा है, अपन वो खरीद रहे पैच. So you can see the distance starting to close. इन सबको. वही. वो सब नहीं होते. वो कुछ गांड घिस के पहुंचे वहाँ तक. वही. और आप दा का आदम मनी. That Marshall sick, he's picked it up and कितने पैसे भी लगाए होंगे ना उनने. Oh, the drone's going to tag QCK in. Time is money, and they spend their money on this. Not, but, oh, they might go into exam. हम भी करेंगे, बस हमारा लगते नहीं वन टाइम. लवड़े मैंने तो बोला था टीम बनाना पड़ेगा लेकिन सीरियस बनना पड़ता है. Chances now here for Furia to strike right back after losing a round. किधर है कौन टीम है? Spike's recovered. There's a lot of time, and they know that Exand is around the B site. Do they challenge it? टीम नहीं है, सबका टाइम मैच नहीं होता. Dan, look at this. They are guessing absolutely wrong. The confidence on Sentinels to keep heading into the same site where the neural theft spotted everyone. It is a mind game being played right now for the Indian leader on the Sentinels team. And Zom's going to get that free plant 3-on-3. Bladestorm still in play though. Immediately cast down. Tens aggressive spawn. That's going to give all the information to Shazam, who hears this underfooting in mid. If he dies, he will give away a gun. शहजाद तो फिर भी साथ है. फिर भी एक किल ले लिया. अच्छा दोनों लाल है. एक नहीं दो ले लिया. दूसरा कर लिया. Comes out, can he survive here? Again, oh, he's already understanding precisely where Jet is. एक और ये boy. Oh, एक HP था ये, एक HP था ये भी ले. Coming out of the Viper's pit, Zones will meet NZR and Sentinels. Once again, they are trailing, but it just seems like they're so hard to kill. Yes, yeah, it seems like, you know, these guys aren't Cloud9. We saw them yesterday, but I swear, Sentinels has 9 lives. Like, these guys are insane. Every time they're down in a map, it seems like you have to have some incredible plays to shut them out, right? You have to come up big on an individual and tactical level if you want to defeat Sentinels. I've seen a lot of teams have leads on them. Not many close them out. Yeah. Yeah, that's a good point. Xan looking to go deep here with a main behind. हम लोग गांड घिसा रहे हैं कि सेंटिनल्स को फाइनल में जाके आ रहा है. It's a freebie. Xan is going to be able to take him down. That's beautiful work. And Tens is trying to find him. Oh, he has him pinned, Dan. Yeah, Marsden was trying to support Xan, but he gets just nailed by Tens. So Xan is back out there alone. And here comes the peek from Xan. He's anticipating it. And that's a 3v2. And Dapper takes that QCK, that lurk. The B-site's open, but Dapper इतना खतरनाक सिचुएशन हो रहा है, इनका दिमाग कैसे चल रहा है? Oh, the timing is terrible for Dapper. Furia quickly rotating towards the site. Sig alone in the 1v2. Guiding light on deck, Dan. These two people are stuck so 1v2, close together. 1v2. The reset coming through for Sig as he walks towards spawn. Wants to eliminate these positions. It's a great position. He does dodge the drone. They have no idea where Sig is. The element of surprise there's the sound cue, takes down one. There's that quick flash. That gets him out of position. Oh, but he's spotted on the reposition. There's the engagement. It's good for NCR. Oh, what a finish. मैं अभी है ना पीसी बंद करके मोबाइल से ज्वाइन हो रहा हूँ. From NCR.
He just lobs out a recon. I've seen him do that a lot actually on these retakes throughout this series, Dan. Very just on the fly recon darts, right? अब तो बस वाइब ही वाइब है, हर पासे हाइप ही हाइप है। Man don't wait for none, फर्क नहीं पड़ता तू आए या आए नहीं, दिल मेरा cold as ice, I put it in my cup.